Is Australia the right destination for you? Cost of living, wage rises, international students, migration, बहुत कुछ हो रहा है. Petrol, energy prices, fresh food. The severe shortage of labour in Australia that began with COVID border closures is persisting. Hello. कैसे हो आप लोग सब? I hope सब कुछ बढ़िया होगा. And I can't tell you, it feels so good. बीच में बहुत कुछ हुआ है. मैंने 2 वीडियोस भी डाली हैं जिसपे आई गॉट सुपर फ्लू, मैं 15 दिन के लिए बीमार था. एंड सेकेंडली मैंने जॉब भी चेंज करी है. और थर्डली मैं एक डिज़ाइन कोर्स भी कर रहा हूँ. सो लॉट इज़ हैपनिंग. बीच में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स डाले थे. इट वाज जस्ट रोड ट्रिप्स एंड एवरीथिंग. मैं इधर उधर बहुत गया था तो आई थॉट पहले वो डाल देते हैं. बट आई स्ट्रांगली बिलीव के बीच में एजुकेशन में डालना बहुत ज़रूरी है. अ लॉट हैज़ बीन हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया. और मैंने बीच में बहुत सारे ब्लॉग्स डाले जस्ट बिकॉज मैं बीच में बहुत घूमने गया था. सो आई थॉट वो भी डाल देते हैं. बट कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेज राइजेस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, माइग्रेशन, बहुत कुछ हो रहा है. सो आई थॉट दैट्स अ ग्राउंड टू कवर. लेट्स कवर दैट इन वन वीडियो. और मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में यूट्यूब पे अवेलेबल है. बट देन how good is that कि everything you get in one place. So अपना लैपटॉप ले आया हूँ मैं. और this video is all about is Australia the right destination for you? So let's find out. What all is covered in this video is wage rise, cost of living, permanent residency, scope and visa grant, job opportunities, and this is all in perspective of international students. If you are an international student or if you are thinking to come to Australia for studies or PR and everything, so this video is for you. So let's go. First of all, about me. People who have been following me from the start, they know that मैं 2018 February में आया था Australia and I came for Masters in International Business in Macquarie University. 2020 में pass out, 2 साल की degree, 2 साल का student visa and then 2 साल का TR. So after that I got into marketing. मेरे बारे में bits and pieces information YouTube पे already है. मेरी हर वीडियो में I relate myself first and then I relate to the society and I relate to what's happening in Australia. Then we compile up and then we make a video. इसमें कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ. सो मैं एडिट करूँगा, मैं अपलोड करूँगा. इसमें कोई भी नहीं है. सो एनीहाउ, enough of that. So cost of living, red. ये कम से कम 5 से 6 आर्टिकल्स है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के एक कट पीस डाल दिया है. Quitting the gym, growing vegetable first. I quit gym, decided to ride my bike everywhere because I don't want to pay for public transport. To measure bill shock inflation 5.1%. As a proof, let's go and watch some videos. Okay. Well, I've got mates that were in the office that now have to work from home because they can't afford the $10 a day for public transport. In the December quarter of last year, almost 1 in 4 borrowers were borrowing at risky levels where their debt-to-income ratio was 6 times or more. I mean, the problem is that the Reserve Bank has spent 18 months telling us that nothing's going to happen until 2024. Every single one of these businesses spoke personally about how there's been astronomical costs in those key parts of their business, whether it's petrol, energy prices, fresh food, chicken, meat. Anything they can get their hands on is going through the roof. So अब आप लोगों ने वीडियोस देख ली हैं. So क्लियर आइडिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सबके लिए, लाइक आई कैन ऑल्सो फील अ पिंच बिकॉज लेटस $3 पर किलो होती थी, अब $15 पर केजी है. एवोकाडोज $1 $2 में मिलता था, अब $6 में 2 मिलते हैं. मतलब $3-3.5 का एक मिलता है. सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और वेज राइज अभी हुआ है. आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द मिनिमम वेज द ऑन TFN इज फ्रॉम $20 टू नाउ इट्स $21. आई शुडंट बी सेइंग दिस बट मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी देखे हैं जिसमें बहुत ही अट्रैक्टिव अपने आप को चैनल पे अट्रैक्ट करने के लिए दे आर प्रेजेंटिंग दैट न्यूज़ के ओ वाओ इट्स $20 to $21. येस इट्स अ गुड थिंग बट so many businesses actually pay you on cash as well. So cash का कोई fixed rate नहीं है. हाँ चलो it's a good initiative, everything is good, but then I don't feel like it's enough. बहुत सारे businesses है कैश में भी पे करते हैं. कैश का मिनिमम $12 भी है. आप हैरिस पार्क चले जाओ, पैरामाउंट चले जाओ, $12-13 1 घंटे का काम कर रहे हैं वो लोग. मिनिमम कैश $15. ईजी मार्ट, 7-Eleven, इन सब पे कैश इन हैंड चलता है. ई रिटेलर्स वगैरह पे करते हैं कि हाँ चलो विल पे मिनिमम. टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एम्प्लॉयर. स्किल शॉर्टेजेस इतनी ज़्यादा हैं, बिजनेस को इतना लॉस हो रहा है, टैक्स वगैरह में हेल्प नहीं हो पा रही है. सो ऑब्वियसली आई थिंक एंड I've seen actually कि businesses are actually moving from paying their employees on TFN to cash.
there's a lot of shift. और कैश पे आप कितना भी मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो आप. This is all based on my experience and of course सबका अपना एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट बात करते हैं वेज राइस की. सो वेज राइस में भी अगेन मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हैं. 5.2% एक्चुअली वेज राइज हुआ है पूरे ऑस्ट्रेलिया में. सो आपने इन जनरल न्यूज़ पढ़ी होगी कि हाँ, अ वीकली राइज ऑफ $40, 20 से $21. सो दैट्स $1 डिफरेंस एंड $40 मीन्स यू वर्किंग 40 आवर्स. सो $40 इज जस्ट टू अट्रैक्ट. आपको अगर 20 आवर्स मिल रहे हैं, इफ यू गेटिंग 15 आवर्स, इफ यू गेटिंग 10 आवर्स, सो just multiply that by 1. So 15 hours, $15 extra. 20 hours, $20 extra. I don't know if that is making a difference because I forgot about the cost of living with public transport. Well, one way journey was like $3-4. अभी $8 हो चुकी है, वो भी पीक टाइम सुबह 7 से 9. और most of the businesses open at 7 to 9. आपको 15 घंटे $15 एक्स्ट्रा मिलेंगे. You're actually paying $8 or $10 in one commute. Do your math and you tell me कि ये बहुत बड़ा difference है कि नहीं है. You'll also see videos कि हाँ, जिसमें comparison होता है कि yes, US में इतना पे करते हैं, कनाडा में इतना पे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतना पे करते हैं. Good thing again, but then you see this, कितने घंटे काम करते हो. Be practical about it. How many hours you work? How much is the rent? Rent. Don't get me started in the rent. My friend was living in Rhodes. $430. मैंने देखा था जब मेरे को लेना था, मतलब $460. मैंने तब देखे थे रेट. अभी it's not even less than $550. So it's a huge and straight jump of $70 to $100 per week. बताओ, can your $1 cope up with that? Talk practical about your accommodation, your groceries, your public transport. Those are the 3 basic things which everybody needs. So next point, permanent residency, and this is the hottest topic to talk about क्योंकि every student has a question कि can I get a permanent residency? Will I get a permanent residency after I study in Australia and all? Let's look at the perspective कि पिछले साल से कितने invites आ रहे हैं, कौन सी field में invites आ रहे हैं. So you will get an idea and you will get to know कि what is the brutal reality. Why am I waiting for 2 years for a permanent residency invite? I am on 90 points. I'm still waiting. So you gotta ask yourself why. क्यों हो रहा है? You have to think about the fact कि किस को invites आ रहे हैं. So उसके basis पे you come here for study. उसके basis पे you select the region. उसके basis पे you start researching for the universities. So reverse engineering. Let's look at the list. What course should be the right one for you if you're only coming for PR? आप लोगों ने हमेशा ये एक वेबसाइट को as a reference मेरी वीडियोस में देखा होगा just because this is the government official website and all the information is right here, right there. Invitation rounds के हिसाब से देखते हैं कि किस लोगों को permanent residency का invite आया है. So let's go down. Invitations issued on 21st April 2022. 189 skill independence point space. 21st April को last हुआ था, तो इतने सारे rounds आए हैं. What is the minimum cutoff? Minimum points is 85. I'm telling you, I am on 85 and it's so hard to get it. And that is the minimum now. Occupations include. Now, how would you get the occupations? और ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या इनमें से, हाँ मेडिकल छोड़ दो, क्या इनमें से आपको कभी लगता था कि आप ऐसे बड़े होके ये काम करोगे? एग्रीकल्चर और बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, नॉट इनवाइटेड, केमिस्ट, केयर सेंटर मैनेजमेंट 90 पॉइंट्स, चाइल्ड केयर सेंटर में 90 पॉइंट्स वे टू मच. पैराप्रैक्टर, डायग्नोस्टिक, ये सब हो गए. प्राइमरी स्कूल टीचर, आपने कभी सोचा था प्राइमरी स्कूल टीचर बनोगा बड़े होके? मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, टीचर्स हैं यहाँ पे, बट ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. इसमें ना कोई इंजीनियर है, ना कोई IT है, ना कोई अकाउंटेंट है. Can I survive in this country? Can I choose this course for PR? क्या मेरे को सिर्फ PR करना है? क्या मेरे को सिर्फ पढ़ाई करके वापस जाना है? क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं, जो PR करके, जो पढ़ाई करके वापस जाते हैं, और जो सिर्फ PR के लिए आते हैं. My suggestion would be come into this country with a course which has the potential of PR and also somehow it aligns with your bachelor's. अगर आप bachelor's करने जा रहे हो तो somehow it aligns with your +1 +2 because you get points. If you're not able to find that, then कोई भी एक छोटा कोर्स देख लो, रजिस्टर्ड नर्स वगैरह का 1 साल का कुछ कोर्स देख लो, PR की एप्लीकेशन उसके बेसिस पे डाल दो, PR आने के ज़्यादा चांसेस हैं. There's so many people doing this and they are actually successful in getting a PR because मैंने एक जगह पे काम किया था, वहाँ पे उसने वीज़ा शेफ में डाला था और अब वो अपना कार का बिजनेस कर रहा है. सो गवर्नमेंट के हिसाब से उसने एक शेफ की ऑक्यूपेशन को वीज़ा दिया है, बट देन एंड ऑफ द डे ही इज़ वर्किंग एज अ बिजनेस ओनर. Doesn't make sense, right? I really thought कि this is wrong,
बट नाउ आई सी एवरीबडी डज दैट। लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं, PR ले रहे हैं, उसके बाद फिर दे आर स्टार्टिंग देयर न्यू लाइफ एंड एवरीथिंग। मैं वहीं का वहीं हूँ अभी, जस्ट बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि मैंने सीधा रास्ता अप्लाई किया है, सब कुछ सीधा किया है। सो वुड यू बी प्रेफरिंग एज योरसेल्फ इन माई पोजिशन, और वुड यू रादर चूज एनी अदर country, or would you rather just make up your mind, come here, study, go back? Next is the job opportunity. So job opportunities के लिए वीडियो देखते हैं, और मैंने जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे वो भी कवर करता हूँ मैं। We need probably in excess of 40,000 engineers just in the next few years alone to meet the current infrastructure pipeline. The market itself has already collapsed. The power system is in a pretty sorry state and deteriorating by the day. Well, for the first time in more than 25 years, public and Catholic school teachers across New South Wales are joining forces, striking for 24 hours over pay and staff shortages. The extent of Australia's skills crisis has been laid bare in a new figure showing almost a third of businesses can't find the staff they need. The severe shortage of labour in Australia that began with COVID border closures is persisting, and the numbers show just how acute the problem is. New data from the Bureau of Statistics showing 31% of businesses are struggling to find suitable workers. 80% of them said there weren't enough applicants for job vacancies to begin with, while 59% said those who applied didn't have the right skills. And the staff in need include tradies, salespeople, labourers and hospitality workers. Industry groups say the shortages are putting a significant handbrake on economic growth. The difficulties in finding labour at the moment are at their most pressing levels in nearly 50 years. So, why did I show you these videos, skill shortages and all? The reason is कि इतनी ज़्यादा skill shortages है, border closures के बाद पिछली गवर्नमेंट ने PR वगैरह नहीं बांटा, और जिसकी वजह से YouTube ब्लॉग्स ने उन सब ने एक ही चीज़ पोस्ट करी कि ऑस्ट्रेलिया मत आओ, just because ऑस्ट्रेलिया में PR का स्कोप नहीं है। So, obvious सी बात है, फर्स्ट रीजन 2 साल कोई वेट नहीं करता है, सेकेंड ऑप्शन हर कोई देखता है, सेकेंड रीजन PR को कोई स्कोप नहीं है, और 70% जनता आउट ऑफ 100 PR के लिए आती है यहाँ पे। दैट वाज वन ऑफ द 2 मेन रीजंस व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू कैनेडा, UK and US. They were allowing student visa holders to come into their countries to start studying and everything. वहाँ पे अब stay back options भी ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे opportunities भी ज़्यादा हो गई है। Job crisis हर जगह है, but ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा है। अभी आप लोगों को दिखाया 31% of businesses are actually not able to find that jobs or not able to find that applicants. So it's the best time to come into Australia for backpackers, working holiday visas, and also the best time to actually apply for jobs and negotiate. मैं अभी पिछली जॉब से नई जॉब में ट्रांजिशन हुआ हूँ, और ट्रांजिशन हुआ है और मुझे 30% इंक्रीज मिला है। Normally you only get 5 to 10% of increase. One of the reason, yes, skill shortages है, ज़्यादा लोग नहीं थे। Of course मेहनत भी करी है, मैंने सर्टिफिकेशंस वगैरह भी करी है, कि वीडियो मैं बाद में डालूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है कि हाँ मेरा लास्ट डे कब था, कब मेरे को इंटरव्यू की कॉल आई, कब क्या कुछ हुआ। So वो पूरी डिटेल, the whole process of transitioning from one company to the other company and what all documents are required, and there are so many points which I really want you to understand and I really want you guys to keep it and use it, because वो बहुत अच्छे points हैं, आपको सैलरी नेगोशिएशन में बहुत हेल्प करेंगे। So वो सब मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ पे खत्म करते हैं। Thank you so much for watching guys. Keep watching, keep sharing, keep loving, keep subscribing. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।